Dear attendees, we are going live now. We're going to start shortly. A very warm good afternoon to all of you. On behalf of Solar Quarter and First View Group, I, Sakshi, and my co host Minakshi welcome you to our webinar on Solar Outlook Rajasthan 2022. Before starting today's proceedings, I take this opportunity to thank our platinum partner for this event, GrowWatt. We will be playing a short video by our sponsor now. Hi, I'm Ashley Chen. Here we are at GrowWatt's showroom, where you will find GrowWatt's story and our extensive portfolio of products and solutions, including PV inverters, energy storage system, EV chargers, and smart energy management solutions. Come with me, let me show you around. In 2010, a group of pioneers of global PV industry came together and founded GrowWatt. In a decade's time, the company quickly grows to become a world leader in smart energy solutions. One of the reasons behind GrowWatt's success is commitment to customer satisfaction. GrowWatt has built an extensive service network of 23 offices worldwide to provide dedicated local support for customers. At GrowWatt, our team also focuses on product quality and reliability, which has driven our rapid growth across the global market. We've introduced a comprehensive and rigorous system for quality control, from design to manufacturing, to make sure we deliver products customers can count on their projects. With more than 400 professional engineers in the R&D team, GrowWatt continuously brings product and technology innovations to the market. Recognized by global customers, GrowWatt is honored with Top Brand PV Inverters by EUPD Research for outstanding reliability, brand awareness, satisfaction, and more. Our new storage battery, the ARC series, and commercial inverter, the Max series, have won all Quality Matters awards by Top Highland for achieving first-rate performance. Here we are at Residential PV Solution segment. We can check out GrowWatt's product offerings. The new Generation X inverters with power capacity from 0.75 to 11.4 kilowatt for single-phase application and 3 to 15 kilowatt for three-phase application.
These sleek inverters have gained enormous popularity among the households around the world, making Growatt the global #1 residential PV inverters supplier according to IHS Markit. Moving next to commercial and industrial PV solution, we can find Growatt's smart and powerful inverters. Power capacity ranging from 33 to 125 kilowatts. These inverters deliver higher yields, enable easier commissioning, enhance system safety and reliability. One of the key reasons for a large number of businesses to choose Growatt for their solar projects, taking Growatt to be the global top 5 commercial inverter brand. Here at the utility scale PV solution, we can see Growatt's new generation Max 1500 volt string inverter designed to lower the LCOE for large-scale solar projects. As the second largest hybrid inverter supplier, Growatt also provide whole system solar energy storage solutions with power capacity from 3 to 100 kilowatts for single-phase, three-phase, and battery-ready applications. The ARC battery series achieves its first-rate performance in numerous safety and reliability tests in Tube Highland PVE test program. Growatt also offers microgrid solutions, power 2 to 300 kilowatt for residential, commercial, and industrial applications in rural areas and on small islands with limited or no grid access. Here we are at Smart Home area. You can experience a new lifestyle of smart plus comfort with Growatt's Smart Home Energy Management solution integrated with the Grow Boost, the water heater controller, solar energy storage system, and Soar EV charger to significantly improve your PV self-consumption. The whole system is built on Poon, IoT, Big Data, and AI, involving the smart dispatch of energy storage, operation and maintenance, and user-side power management to maximize the solar energy efficiency. Finally, we are here to check out Growatt's Smart Energy Management platform developed for end users, installers, and distributors to access the remote monitoring of the systems, improve their service efficiency, and reduce the O&M costs. Here at Growatt, we have the top reliable and sustainable smart energy solutions for all scenario applications, and you can always count on Growatt for your renewable energy projects. Now, I would like to invite Mr. Shantanu on stage. Over to you, Mr. Shantanu. Yeah, thank you, Sakshi. And once again, thank you, Solar Auto, for giving this particular opportunity. So after this wonderful video, I will be just giving a small presentation about Growart as a company and what are the different products that we are offering for the Indian market. So I'm just sharing my screen for the presentation. I hope my screen is visible to all of you. Yes, it's visible. Yes. So, not taking much of your time, I will be going ahead with the company profile. So, this particular presentation is mainly about our company, then the different solutions and the products we are offering, and towards the end, some of the installations that we have done with Growatt inverters. So, founded in the year 2010 with an USD capital of $10 million, Growatt is a new energy enterprise which is dedicated to R&D as well as manufacturing of on-grid inverters, energy storage solutions, EV chargers, as well as smart energy management solutions. Talking about the different milestones that Growatt has achieved in the last 12 years. So founded in the year 2010, in the next subsequent year, that is 2011, we were the
exporter of inverters from China. This is the same year in which we established our subsidiaries in Australia, Germany, and Hong Kong. In 2012, we became the number one brand for string inverters in China itself. In 2015, we came up with our first hybrid storage inverter. From 2016 onwards, Growatt is the number one inverter brand for the residential inverter in China. In 2017, we exceeded the global shipment of 1 million units globally. In 2020, if we are talking about, we came up with a new manufacturing facility where we have ramped up our production from 5 gigawatt up to 20 gigawatt per year. This is the same year in which we were also the number one inverter brand for the residential inverters for the global market as per the IHS market. This is the same year in which we also launched our second generation of Grow Home energy management solutions. So talking about the sustainable growth for the last 2 years, starting from 2020, when the whole world was uh, struggling with the COVID pandemic, still we were able to do a sustainable business of around $303 million. And in 2021, we have almost double our revenue, exceeding $500 million in terms of sales revenue. Till date, we have shipped more than 3.8 million units for the global market, which aggregates to around 40 gigawatt of supply of inverters. Right now, we are having our presence in more than 100 countries globally, and we have employed more than 3,000 employees. We are having a strong R&D team of more than 600 engineers. For the Indian market for the last 2 years, Growatt is ranking number one for the supply of inverters in the rooftop segment. Also, if you're talking about the distributed PV inverter market, then Growatt is ranking in mostly top three positions for most of the countries globally. Maybe it can be Mexico, Brazil, Italy, China, India, or Vietnam. In 2022, as per the IHS market report, Growatt was again number one for the supply of inverters in the residential segment with a market share of more than 13%. Also, if you are talking about the supply of inverters for the C&I segment, then Growatt is ranking in top 5 inverter brands with a market share of more than 10%. Also, for the global hybrid storage inverter market share, Growatt is ranking number 2 as per the Wood Mackenzie report. In 2022, as per the UPD Research Lab, Growatt was bestowed with 22 different awards as a best inverter brand for various countries, along with the best inverters in the storage segment. And this particular award we have received for all the major continents like Europe, Africa, America, as well as Asia Pacific. Talking about our main backbone of the company, that is the research and development. So as I have already mentioned, we are having a team of more than 600 employees only for the R&D purpose. And every year, Growatt is spending around 6% of its total revenue only for the R&D. From the year 2016 to 2021, cumulatively, we have invested more than $100 million for the R&D purpose, which is around more than 20% of CAGR of R&D investment. We are having more than 110 patents to our name, out of which 80 are Chinese patents, more than 20 international patents, and more than 20 software copyrights. Growatt's 20 kilowatt inverter is the only inverter tested by the Photon Lab that has achieved a maximum efficiency of 99.06%. Also, we have set up a joint lab with Texas Instruments for carrying out different, you can say, developments for the renewable energy segment. Also, we have established a research center along with China Science and Technology Ministry in our headquarters. In 2020, as I have already mentioned, we came up with a new manufacturing facility of 20 gigawatts, which is spread across 2 lakh meter square of area. Here,
Each year, we can produce around more than 4 million units and 400,000 battery modules every year. This is a completely automated production line, and we are executing five-step quality system. Talking about our global presence, we are having more than 23 offices and warehouse globally, and our products are installed in more than 110 countries worldwide. Talking about the presence of Growat in the Indian market, right now we are a team of more than 25 people, where we are having one Indian director. To support him, we are having four salesperson and two product managers. And for the after service part, we are having more than 20 service engineers, which are situated at different cities in India. We are having two service centers in India itself. One is in Hyderabad, and the second one is in Ahmedabad, which started its operation in the year 2020. And cumulatively, we are carrying a stock of more than 10 megawatt in terms of spare parts and spare inverters to support our customers for the after sales. Growat was founded in the year 2010, and we entered into Indian businesses from the year 2012. So this year we are completing our 10 years presence in the Indian market. And till date, we have shipped more than 2.5 lakh units, ranging from 1 kilowatt up to 253 kilowatt, which aggregates to around, you can say, 3 gigawatt of inverters for Indian market. Now coming on to the second segment, that are the different solutions and inverters that we are offering for the Indian market. So basically, the PV inverter market is differentiated into three different segments: the residential, commercial, and industrial, and the last one is the utility scale segment. So if you're talking about the residential products, here we are having two ranges: single phase and three phase. In single phase, we are having a range of inverter which starts from 1 kilowatt up to 6 kilowatt. And in three phase, we are having a range of inverter which starts from 3 kilowatt onwards up to 15 kilowatt. For the C&I, we are having a range of inverter which starts from 20 kilowatt onwards and goes up to 125 kilowatt in 400 volts output. Our 100 and 125 kilowatt, which was launched in the year 2022 January, and till date we have shipped more than, you can say, 500 units only for the Indian market, which aggregates to more than 50 megawatt of inverter supply by the end of July 2022. Also, we have come up with the utility inverter range in 250 and 253 kilowatt for the Indian market in 1500 volts. Talking about the energy storage system, so here we are having AC coupled as well as DC coupled inverters, and in this also we are bifurcating into two different segments: single phase as well as three phase. So in single phase, we are having a range of inverters starting from 3 kilowatt onwards up to 6 kilowatt. Whereas in three phase, the range starts from 4 kilowatt onwards up to 10 kilowatts. Now basically these are hybrid inverters which can work as an on-grid inverter as well as off-grid inverter when grid is not available. Also in the on-grid segment, we have come up with a battery ready, storage inverters, in which we have already provided the provision for connecting the batteries in the near future. Also, we are having our high voltage and low voltage batteries for this particular storage applications, which starts from 2.5 kWh and can go up to 50 kWh of backup. Just giving you a brief about our battery ready systems. So basically these particular inverters can work as a normal on-grid inverter, and in future if you want to go for any battery based system, then instead of going for a completely new system, you can just install the batteries to the same existing inverter, and the same system can work as a battery storage. In off-grid, we are having single-phase inverter in 5 kilowatt and 3 kilowatt. And this year, we are launching a new off-grid inverter up to 100 kilowatt, which in parallel connection can go up to
300 kilowatt of backup supply. Also in the year 2021, Growat launched its EV chargers for four-wheelers. Again, we are having AC chargers as well as DC chargers. In AC chargers, in single phase, we are having a range of 3 kilowatt and 7 kilowatt, whereas in three phase, we are having 11 kilowatt as well as 22 kilowatt. We have also launched fast DC chargers in 40 kilowatt with single gun as well as dual gun. Talking about the energy management system, so basically Growat's smart energy solution is built up upon IoT, artificial intelligence and big data that we have collected for the last 12 years. It is the ideal solution which can help to provide a clean energy for household as well as for the businesses. And for that particular purpose, we are providing different monitoring devices. Like for individual inverter monitoring, we are providing dongles with Wi-Fi, GPRS or 4G. And if you are having multiple inverters at a single site, then you can go with our data logger by the name of Shine Master. Also, we are having our own applications where you can monitor all your data under a single screen. These particular applications are available for iOS as well as for Apple. Coming on to the last segment, some of the global references where Growat inverters were being used. So this was one of the case study in which in the year 2010, the customer has installed a 5 kilowatt single phase inverter. And in 2020, he went for the extension of his solar PV plant, and where again he went on with the new generation of Growat inverters of 5 kilowatt. So the inverter which was installed in the year 2010 is still working without any issues for last 12 years. Then this is one of the energy storage solution. For Royal Thai Air Force, we have provided different energy management solutions or battery-based systems for 15 different air bases all over the Thailand. This is one of the project in Switzerland. Then in Maldives, a 3 megawatt solar farm. In Vietnam, a 3 megawatt solar farm. 4 megawatt solar farm in China. In Ukraine, this is a 5.5 megawatt plant in Kolhapur by Kirloskar. A 10 megawatt plant in China again with our Max series. Now this is a 90 megawatt solar farm in which 20 kilowatt string inverters were used. Same 100 megawatt solar farm, Hill Solar Farm, where 40 kilowatt of inverters were being deployed. This is a 4 megawatt plant in Hyderabad where 200 numbers of 20 kilowatt are being used. This is our first installation with Max inverter. In IIT Hyderabad for Forbes Aurangabad. This is a utility power plant of 7.5 megawatt at Solapur with our 1500 volts inverter. Again a 10 megawatt plant with our 12 MPPT inverter Max 250 in Jhansi. This is a 1 megawatt for Sadguru Cement in MP. Again, 6 megawatt solar farm in Solapur using 60 kilowatt inverters, 84 numbers. So that's it from my side. This was a small presentation about Growat. I hope you enjoyed it. Thank you. Thanks a lot.
Thank you so much for that insightful presentation, Mr. Shantanu. As we all are aware, the Indian state of Rajasthan is committed to promoting solar energy by advancing solar friendly policy making with a solar generation potential of about 142 gigawatt. Our webinar today will explore key pointers in Rajasthan's solar market with our moderator for the evening, Mr. Ajay Yadav, who will initiate the proceedings of the day. Welcome to screen, Mr. Yadav. Sir, I think you are on mute. Okay, thank you, Sakshi. I'm audible. My voice is clear or not? Yes, sir, you're audible, but your voice is just cracking a bit. So, I think there is some problem in network. So, I'll just switch off my video. वीडियो और ऑडियो दोनों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है. अभी मेरी वॉइस क्लियर है? Sir, it's fine now. You can also switch on the video. It's fine. ओके, ठीक है. तो ठीक है, वैसे भी चैनल की ज़्यादा जरूरत नहीं है. हम जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं. तो वेलकम टू ऑल पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स. आज का हमारा एजेंडा है राजस्थान सोलर पावर आउटलुक. और हमारे वेरिड बैकग्राउंड से पैनलिस्ट हैं, लाइक मिलिट्री, टेक्निकल, मैन्युफैक्चरर, डेवलपर और एसोसिएशन भी हैं, डिस्काउंट भी है. तो हम पहले शुरुआत करेंगे. थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूंगा राजस्थान का कि अभी क्या सिचुएशन है, और उसके बाद हम स्पेसिफिक क्वेरीज पे जाएंगे, पैनलिस्ट से हम बात करेंगे. और मैं अपनी कोशिश करूंगा कि ये सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड रहे, किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर से रिलेटेड नहीं. राजस्थान की हम बात करें, हम अलग अलग पैनलिस्ट की बात करेंगे, बट सब राजस्थान के संदर्भ में होगा. मैं अभी सोलर से जैसे शुरुआत करता हूँ. आज की डेट में इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8 गीगावाट है. इसमें से 55 ग्राउंड माउंटेड और 13 जो है रूफटॉप. इसमें से मैं राजस्थान की बात करूँ तो 40 गीगावाट राजस्थान ने इंस्टॉल किया है. अराउंड 12 गीगावाट ग्राउंड है और 800 मेगावाट के अराउंड 800 मेगावाट के अराउंड रूफटॉप सोलर है. अगर मैं टोटल की अभी इसमें देखूँ तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, सुनने में कि अराउंड 25% जो पूरे इंडिया में जो इंस्टॉलेशन हुआ है राजस्थान में. Mr. Yadav, sorry to interrupt, sir. Sir, your audio is actually cracking a little bit. Sir, could I request you to shift your places a little bit? So you can also try switching on your video once. Please give us a moment, attendees. Sir, you just have to be a little louder, that's all. Okay. I thought it's breaking actually. So, ठीक है. 25% of the whole country is installed in Rajasthan, which seems a very good news. हाल ही में कुछ बहुत अच्छी पॉलिसी भी आई है जिस पर हम बात करेंगे. जैसे कि अभी हाल ही में ईवी पॉलिसी लॉन्च हुई है, जहाँ पे कुछ अच्छी बातें कही गई है रिन्यूएबल को लेके, that public institutions will be allowed to
purchase power through open access in accordance with Open Access Rules 2016. Exemption from ED for 7 years. अगर कोई रिन्यूएबल से पावर प्रोक्योर करता है ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए थ्रू कैपेसिटिव और ओपन एक्सेस, वहाँ पे बैंकिंग मिलेगी 100% एग्जेम्पशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डीलिंग चार्जेस फॉर अप टू 10 years। ये अच्छे रेगुलेशन, अच्छी पॉलिसीज आई है, रेगुलेशन नहीं बोलूंगा मैं, अभी पॉलिसी आई हुई है। इससे पहले ही ओवर पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें कि ये कई सारे पॉइंट्स कॉमन थे और वो वहीं से लेके ईवी पॉलिसी में डाले गए हैं। इसके अलावा एक अच्छी, मैं आपको अभी लेटेस्ट न्यूज बताऊँ तो ग्रीन हाइड्रोजन पे आधारित से काम शुरू किया है। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। आरआईसीएल ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और उसकी कोई भी पॉलिसी अभी तक नहीं आई है, बट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की ऑलरेडी बात हो चुकी है, जो कि अभी वो भी रेगुलेशन आ जाएगा नेशनल लेवल पे। इसके अलावा सोलर पॉलिसी में कई जगह, अगर मैं जब मैं सोलर को प्रमोट करने की बात करता हूँ, अगर आप सोलर पॉलिसी 2019 को देखें तो वहाँ पर अगर आप प्रमोट वर्ड को ही देखें तो वो 40 से 45 बार प्रमोट का वर्ड हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा फंक्शन की बात हुई है। लेकिन Mr. Yadav, और sorry to एक interrupt you. Is it possible if you can just remove your headphones and try speaking? Just a moment, attendees. We will resume shortly. Just give us a moment, please, attendees. Mr. Yadav, you're not audible. Miss Ankit Chaudhary. Good evening, ma'am. Yeah.
Ma'am, since we are facing mutual address audio, Hello. I request you to moderate this panel now. Hello. Yes, Mr. Yadav, your audio is better now. अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। Yes, sir, much better, sir. हाँ यादव Please जी, आपकी continue. आवाज़ आ रही है, अब ठीक आ रही है। आ रही है, चलिए ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, अभी क्लियर है ना? Yes, sir, Yes, sir, it's absolutely. absolutely fine now. ओके। तो आशु, मिस्टर आशु गुप्ता हैं पैनल में? एक्चुअली मेरा पहला सवाल उनसे होने वाला है। अभी क्या मैं बैकग्राउंड बना रहा था, बट Yeah, I'm very much there. ओके, थैंक यू, वेलकम आशु जी। देखिए आशु जी, मेरा सवाल ये है, आप रेगुलेटरी के एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी पॉलिसीज राजस्थान में ऑलरेडी हैं। जैसे कि मैं एक बात कर रहा था कि सोलर पॉलिसी में क्लॉज 7.3 में लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट प्रोविजंस वुड बी मेड इन अर्बन बिल्डिंग लॉज टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम, और ये बाय लॉ भी आ चुका है, बट ये कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। ये होटल्स और जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स थी उन पे सोलर लगाने की बात थी। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि जो ईवी पॉलिसी है उसमें भी एग्जेम्पशन की बात कही गई ईडी के लिए, बैंकिंग की बात कही गई, ट्रांसमिशन एंड व्हीलिंग चार्जेस को एग्जेम्प्ट करने की बात कही गई, और हाइड्रोजन पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है आरआरईसीएल ने। अब जब हम बड़ी बड़ी बातें जब हम देखते सुनते हैं कि राजस्थान टॉप पे है, नंबर 1 है, अभी है नंबर 1 आज की डेट में, तो वहां पर जब हम उसको बाइफरकेट करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि भाई जो ग्राउंड माउंटेड में जो काम हुआ है वहां पे नंबर 1 है। मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि रूफ टॉप जो है वो एक्चुअल फेज है डेवलपमेंट ऑफ सोलर इंडस्ट्री का। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि रूफ टॉप लगाने वाला राजस्थान का ही होगा। उस पे रूफ टॉप पे मैक्सिमम जो काम करने वाले जो लोग होंगे, ईपीसी प्लेयर्स, वो राजस्थान के होंगे। जिनको जॉब मिल रही होगी वो राजस्थान के होंगे। और तो और अगर मैं बात करूं कि जो पावर जो अपन नेट मीटरिंग कर रहे हैं तो वो डिस्कॉम के लिए है। क्राइटेरिया अगर आरपीओ का मीट हो रहा होगा तो डिस्कॉम का हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स को हम देखें, जब हम इंस्टॉलेशन सोलर रिन्यूएबल इन सबकी बड़ी चीजों की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं 14 गीगावाट 12 गीगावाट जो यूटिलिटी स्केल है, उन सबको लगा के हमने बोल दिया कि हम नंबर 1 है। बट पावर प्रोक्योरमेंट की बात करें, आरपीओ क्राइटेरिया की बात करें, जॉब क्रिएशन की बात करें, या फिर हम देखें कि भाई क्या राजस्थान की कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सोलर में उनको कुछ उससे सपोर्ट मिला है, इस तरह की कोई चीजें हैं, या फिर ऐसा है कि भाई बाहर से कोई भी आ रहा है, हमारी जमीन को उधार ले रहा है, पावर प्लांट लग रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हमें खुश होने की जरूरत है, या राजस्थान कहां पे है और पॉलिसी कहां पे लैग कर रही है? क्योंकि असली पिक्चर जब आप पाएंगे तो आप देखेंगे रूफटॉप में जो चीज हो रही है वहां पे आपको असली पिक्चर दिखेगा कि हम बहुत पीछे हैं। Mr. Ajay, you are absolutely right that we are lagging a bit in terms of rooftop, whereas rooftop is the essence and it is actually the true usage of solar power generation, because obviously it is distributed in nature and gives the maximum benefit. Mr. However, Ashish, I'm so a sorry to couple of interrupt reasons you. Is it why. possible, sir, is it possible for you to switch on the video? Uh, Let me try, because I don't know, it is showing red color every time I'm switching on. So No problem, sir. Please continue. uncertainty which cropped up last year because of no net metering to be given for non residential, non agriculture consumers, and then followed by a bit of amendments and then a bit of relaxation, but along with certain
the Ektaj and cross subsidy, that actually took away the entire pace at which the rooftop segment was getting developed in the state. Secondly, it is highly unfortunate in the state of Rajasthan, obviously, because there is an ambiguity, and obviously there is a electricity duty which is being charged from power which is consumed from solar. That is a most unfortunate thing which can happen, that solar power is levied with the additional electricity duty, whereas conventional is not. So that also brought a big setback. And now that the market started picking up, obviously the developers will agree to it, that the shortage of the solar modules, or the prices going up of the solar modules, actually have resulted in again drop of growth of capacities in this sector. बिल्कुल राइट राइट ठीक है आशु जी बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने बताए ईडी की जब हम बात करें तो वहां पे रिलैक्सेशन और जब हम सोलर पॉलिसी में लिखने के बाद भी ईडी चार्ज कर रहे हैं फिर भी हम ईवी पॉलिसी जो नई बना रहे हैं उसको उसी सोलर पॉलिसी से रेफर करके वहां पे भी वो चीज लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी एक तरह का बस लिखा हुआ है ये आगे एप्लीकेबल होगा क्या नहीं होगा वो पता नहीं तो कहीं ना कहीं पॉलिसी पे हम लैग कर रहे हैं या हमारा क्लैरिटी नहीं है भाई अभी भी मैं अब दूसरा सवाल जैसे एनटीपीसी से मिस्टर श्रीनिधि शर्मा है उनसे लेना चाहूंगा अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है आरआरईसीएल ने एनटीपीसी के साथ में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पार्क लगाने के लिए अब देखिए मेरा सवाल वहीं से शुरू हो रहा है जहां पे मैंने खत्म किया था कि भाई ये जो सोलर पार्क जो लग रहे हैं हम जहां पे नंबर 1 बन रहे हैं तो क्या वो पावर या तो हमारे राजस्थान के काम क्या चीज आ रही है क्या वहां के लोगों को काम मिल रहा है क्या वहां के डिस्कॉम को पावर मिल रही है सस्ती क्या चीज हो रही है या फिर यहाँ पे सिर्फ हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मार के या वेजिटेशन का नुकसान करके और हम वाहवाही ले रहे हैं तो ये जो 10 गीगावाट का जो एमओयू हुआ है वो पावर कहाँ जाएगी किस डिस्कॉम में या किस स्टेट के साथ टाई अप हुआ है या उसका क्या आगे है राजस्थान का कोई शेयर है या सिर्फ राजस्थान में लैंड दी है So, thank you, Ajay ji. I just wanted to inform one small point that we were discussing previously regarding the solar rooftop installations. So, unfortunately, the solar rooftop installations pan India in all the states have not been very, very attractive, I would say. In that, also, if we speak only of numbers, I believe Rajasthan would be number 3 after Gujarat and Maharashtra, I believe. So rooftop में ऐसा नहीं है कि it's only Rajasthan which is lacking. It's all the states which are lacking. Maybe it's the policy, maybe it's the awareness, or maybe there are other things wherein the business model, the packaging of the rooftop needs to be to cater to the individual resident or the societies, as the case may be. तो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है अजय जी लेकिन रूफटॉप में पैन इंडिया में ही लैकिंग है इनिशियली यू वुड रिमेंबर वी हैड अ टारगेट ऑफ 100 गीगावाट वेयर इन 60 वाज लार्ज स्केल एंड 40 गीगावाट वाज रूफटॉप बट वी आर नोवेयर क्लोज टू 40 गीगावाट आई बिलीव हम लोग अभी आई थिंक अराउंड 7 to 8 गीगावाट भी नहीं होंगे बट उसमें अगर हम राजस्थान की रैंकिंग बात करें राजस्थान की रैंकिंग स्टिल उसमें it's not that Rajasthan is lacking behind so that is one point which I just wanted to make now coming to the question which you had raised so what has happened is that NTPC has very aggressive plans we would want to become as big as our thermal unit in the next 8 to 10 years so our ambition is that we have a portfolio of 60 gigawatt by 2030 so uske liye the biggest resource required is land and land we all know that in Rajasthan we have ample land and on top of that we also have good radiation in Rajasthan so उसको हमको यूटिलाइज करना है राजस्थान के साथ जो एमओयू हम लोगों ने किया है 10 गीगावाट का हमने नहीं किया है देयर आर अदर कंपनीज हु हैव आल्सो डन दैट आई बिलीव एसजेवीएन हैज डन दैट एंड देयर आर फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स हु हैव आल्सो डन दैट so it's mostly which would be the land which would be given by the Rajasthan government we have done similar MOUs in
in Gujarat also. In Khavda, we are coming up with a 4.7 gigawatt plant in Khavda in Bhuj. तो वहाँ पे हम लोग सोलर, हाइब्रिड, होपफुली विंड, बैटरी, हाइड्रोजन, इन सब का हम लोग वहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे. Similarly, we have similar plans for Rajasthan also. So, irrespective of whether that electricity is being utilized in Rajasthan or not, there are 2 or 3 important points which I want to make. First is that the labor which we'll use would mostly be the local labor. So वहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट को एक बड़ा बेनिफिट है. दूसरा है that there is a levy of RREDF. So if the electricity is not being procured by Rajasthan government and it's being sold to other states outside Rajasthan, then there's a levy and that keeps on increasing. I think 24 tak it's a fixed amount. Then so next year it increases to, let's say, I think 3 lakhs per megawatt. So Rajasthan government directly or indirectly will be a beneficiary of kind of utilizing the assets it has, because if it does not give the land for solar production, then there is not much productive land, agricultural land available in Rajasthan. So this is a very, very good opportunity for Rajasthan as a state to grow and become kind of the and drive the growth of solar sector in India. Because अब इसने it has overtaken, आप खुद ही बोल रहे हो कि it has 25% installed capacity, but it only has 10% of the total area of India. So in 10% of the area, it has 25% installed capacity, and I don't think every state should go for rooftop. Rooftop is very good for distributed point of view and other issues are there, but जिस स्टेट का जो फोटे है, बिकॉज राजस्थान इज अ डेजर्ट, इट इज अ वेरी यूनिकली सिचुएटेड स्टेट, तो उसको वो ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए इन माय ओपिनियन. सो इफ इट हैज लैंड विच इट कैन give to developers, wherein we have solar which can be installed, we can have hybrid, and you said that we can also the green hydrogen policy and other green ammonia policies are also being implemented, so they are very good for Rajasthan as a state, directly or indirectly. The beneficiary would be Rajasthan government, Indian government and the solar sector as a whole. बहुत बहुत सही आपने पॉइंट्स बताए श्रीनिधि जी. देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी जैसे रूफटॉप की बात हुई ना, तो करीब 12 से 13 गीगावाट का काम हुआ है. मेरा ये कहना नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा था कि राजस्थान पीछे है रूफटॉप में. मैं ये कह रहा था कि अगर जब हम ये बोलते हैं कि हम नंबर 1 है, तो क्या हम हैंड इन हैंड चल रहे हैं रूफटॉप और उसमें? देखिए, किसी सेक्टर को बढ़ावा हम तब मानेंगे जब हम एक साथ चल रहे हैं कि हाँ भाई, मेरा रूफटॉप भी चल रहा है और ये भी चल रहा है. रूफटॉप में ज्यादा एफर्ट शायद राजस्थान को ही देना है, इसलिए मैं कह रहा हूं. वहां पर एनटीपीसी गया या कहीं से उनको कोई ऑफर मिल रहा है, हर किसी को पता है. जैसे आपने कहा कि बहुत सारी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो राजस्थान में अप्रोच करती हैं. लेकिन अब आप इसका दूसरा पॉइंट देखिए कि वो अप्रोच करती हैं सिर्फ लैंड के लिए, अपना पावर प्लांट लगाने के लिए. वहां पे इरेडिएशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या वहां पे कोई, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करूं, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी देखिए टेक से आशुतोष जी शायद है नहीं अभी अपने साथ, लेकिन मैं बताऊं अभी देखिए 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कमीशन हुआ है मई के आसपास राजस्थान में. वो सप्लाई होगी इलेक्ट्रिसिटी पूरी महाराष्ट्र को. उसके बाद अब देखिए, अगर एक्मे ने कुछ टाइप किया है राजस्थान के साथ, तो क्या गवर्नमेंट को इस पे, भाई किसी के साथ मेरे टर्म्स हो गए, आज एनटीपीसी मेरे साथ में, तो क्या मुझे और अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? मैं उसके बाद बताता हूं. अभी एक्मे ने करीब 52,000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां पे कि 1800 जॉब्स जनरेट होंगी. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सामने से अगर कोई चीज आ रही, जिस तरह से हमें लैंड मिली है, कुदरत ने दी है, इरेडिएशन मिला है, कुदरत ने दिया है, वैसे ही क्या राजस्थान वेट नहीं कर रहा है हर चीज सामने से मिलने के लिए कि ठीक है भाई एनटीपीसी आ गया, मैंने एमओयू साइन किया और मैंने उस पर बड़ी बात कर दी कि भाई हम लोग नंबर 1 है. तो क्या वो असली में नंबर 1 है? क्या वहां के लोगों को फायदा हो रहा है? ठीक है, गवर्नमेंट को हो रहा है. अभी मैंने जैसे आपको बताया, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट का जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, उसकी भी फीस है, आरआरईसीएल को वो फीस मिलेगी और वो उसी तरह मिलेगी जैसे कि कुसुम में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए. देखिए, कुसुम का तो सीधा फायदा डिस्कॉम को मिलने वाला था, आरपीओ मीट होता, पावर मिलती, लेकिन वो भी फेलियर हुआ. तो जहां मैं सिर्फ ये पॉइंट रखना चाहता हूं कि जहां पे राजस्थान को आगे बढ़ के कुछ करना है, तो वहां पे सिर्फ बात पॉलिसी तक रह जाती है
और वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। हमने खुद जो चीजें पॉलिसी में लिखी है कि भाई ईडी नहीं लगेगा या हम किसी चीज को बढ़ावा देंगे, मैं इसी से रिलेटेड ईवी पॉलिसी की भी बात करूं तो बहुत लेट है, ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात करूं तो अभी भी पॉलिसी नहीं आई है। अब देखिए, मैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे आता हूं, अभी मिस अंकित चौधरी है हमारे साथ, तो अभी पिछले मैं आरआरईसीएल के ही चूंकि उस पर आ रहा था पॉइंट पे कि भाई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, सब कुछ है, बट वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, वो हमें देखना है। इसी उसमें कुछ 15-20 दिन पहले जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी आरएसए और आरआरईसीएल में, जहां पे ये था कि भाई 36,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज है बीओएस मैन्युफैक्चरिंग की, और इसमें मैं कोई वैसे प्लांट नहीं जोड़ रहा हूं जो आपका 10 गीगावाट एनटीपीसी या आगे भी और भी जो एसबीजीएन और जी जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहा हूं, जो हमारे ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो उस पर बात हुई कि भाई एक बहुत रोबस्ट पाइपलाइन है राजस्थान के प्रोजेक्ट्स की, तो हमें भाई मॉड्यूल और इन्वर्टर में राजस्थान कहीं पे भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरर यहाँ पे नहीं है। अगर हम गुजरात को कंपेयर करें तो अब बड़े सारे अच्छे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स वहां पे, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ठीक है, शायद उसी चीज को ध्यान में रख के हमने ये चीज एसोसिएशन ने कहा कि भाई एटलीस्ट हम Sir, Mr. Ajay, we lost your audio. Mr. Yadav, you're on mute, sir. Okay, Mr. Yadav is back. यस मनीष, हाँ, तो मैं अंकित चौधरी मैम से ये जानना चाहूंगा कि भाई जो मीटिंग हुई थी तो उसका क्या आउटकम निकला। देखिए, हम आज जो बात कर रहे हैं, हमें कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है कि क्या आउटकम निकला, मीटिंग हुई, क्या हुआ, उस पर आगे कुछ डिसाइड हुआ या आगे क्या होने वाला है, मैम बताएंगी। अंकित मैम। Thank you, sir. Hello, everyone, and thank you, Ajay, sir, for asking the question and giving this opportunity to explain actually the outcome of that meeting. So basically, वो जो हमारी meeting RRCL के साथ में हमने थी, keeping RRCL as a platform within the developers and the MSs, the owners of the MSs. So basically, उस मोटिव था, एजेंडा था हमारी मीटिंग का, वो यही था कि एक gap is there between the developers, or we can say the stakeholders and the units. So basically the main motive of that meeting was to bridge that gap in between the two parties. And what the conclusion has been taken out is like we are going to have a conference in the coming days in which we are actually going to give a platform to the MSME units to showcase their products to the developers and the EPC companies, so that they can actually get the point to the point thing that what actually the products are there available within the Rajasthan itself, what quality products are there. Because what they're thinking is that they are sourcing the products, or we can say the sourcing the equipments from outside the companies, out of the Rajasthan situated companies, thinking that the reliability is not good manufactured in the Rajasthan, for the equipments manufactured in Rajasthan. So that is not the thing. See, that gap or communication is there between the two parties. So we just need to bridge the gap in between them, and that is the conclusion which we came out on the same. Sir. बहुत अच्छा आपने रिप्लाई दिया अंकित मैम। देखिए, मैं अभी भी अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूँगा कि उस मीटिंग में कुछ कंक्लूड नहीं हुआ ढंग से। देखिए, मैं अभी फिर से, मैं जैसे अभी श्रीनिधि शर्मा जी बात बता रहे थे कि भाई जो भी कुछ फायदे हैं राजस्थान के कि भाई रेवेन्यू में या किसी तरह भी, मैं अभी भी इस बात को नहीं मान पा रहा हूं कि जैसे भी बात हुई कि भाई इतनी बड़ी पाइपलाइन है और मैन्युफैक्चरर अगर यहाँ पे हमारा जो
एमएसएमईज हैं, वो अगर कुछ मैन्युफैक्चरर करते भी हैं एमएसएमई, तो क्या वो एनटीपीसी या जो बड़े ग्रुप्स हैं वो उनसे कभी भी प्रोक्योर नहीं मतलब करना चाहेंगे, करेंगे भी नहीं, और कोई भी होता, मैं भी उनकी जगह होता तो मैं उनसे प्रोक्योर नहीं करता। दूसरा, So that is the point now. That need to be started. That need to be initiated from some point. Because अगर वो कभी हम इनिशिएट ही नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो वो चीज़ आप जिस एनटीपीसी या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाएगी। एंड दैट गैप जो कि बहुत ही लार्ज। Miss Ankit, are you there? हेलो, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हुई हैं। अ, अ, Mr. मिस्टर Yadav, this अजय, हम question, हाँ, we can ठीक है, direct this question to some other attendee. बिल्कुल। मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मैं अभी जैसे इन्होंने कहा, अंकिता मैम ने कहा कि भाई हमें कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन उससे भी वैलिड ये है कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें सही सीढ़ी पे जाना होगा। वो एमएसएमई जो अभी शुरुआत कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं जो मार्केट है उनके लिए वो रूफटॉप वाला है। रूफटॉप जो ईपीसी प्लेयर्स हैं वो तो उनसे प्रोक्योर कर लेंगे, लेकिन अगर हम ये चाहें कि एनटीपीसी से, ठीक है हम अभी लेट हो गए, हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की, जो भी है एमएसएमई को बढ़ावा नहीं मिला, और फिर मैं पॉलिसी पे जाता हूं, तो अगर आप पॉलिसी में देखेंगे तो हर जगह एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए है। स्टार्टअप इंडिया की तर्ज पे राजस्थान में आई स्टार्ट भी है, सब कुछ होता है, लेकिन वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। और अभी भी अगर हम, ठीक है हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जब भी करें तब अच्छा है, जब आंख खुले तभी सवेरा है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि वो हमारे जो बायर्स हैं वो कौन होंगे। फिर से हमें रूफटॉप और रूफटॉप के जो ईपीसी प्लेयर्स हैं उनको बढ़ावा देना होगा, और उनका एक इकोसिस्टम बनाना होगा कि हाँ वो वहां से प्रोक्योर करें। एटलीस्ट जब मैं कुछ 3 साल बाद जब मैं एनटीपीसी से बात करूं तो मेरे पास वो बैकग्राउंड हो कि हाँ वो मुझसे प्रोक्योर कर सके। तो अगर उस पॉइंट पे नहीं देखा जाएगा तो वो सिर्फ एक मीटिंग तक ही रह जाएगा, हो सकता है पॉलिसी भी बन जाए लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अब देखिए, अब अब मैं फिर रूफटॉप पे चूंकि बात कर रहा हूं तो मैं हमारे पीसी तिवारी सर हैं अजमेर डिस्कॉम से, मैं उनसे एक सवाल लेना चाहूंगा। रूफटॉप जी को बताइए। देखिए, आप पता है कि रूफटॉप पिछले कुछ दिनों से अभी नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है मोदी जी ने, और भी बहुत सारी चीजों को लेके, इवन ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे से जो है उसको प्रमोट भी किया गया हर न्यूज़पेपर में, लेकिन वो शायद उस लेवल का अभी तैयार नहीं है। ये तो हो गई नेशनल की बात। अब हम बात करते हैं जो एजेंसी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसने के राजस्थान में जो रूफटॉप का टेंडर है वो उन्होंने उस टेंडर को किया है, और गाइडलाइन बहुत सारी चीजें कहती है कि भाई रूफटॉप सोलर सेल होना चाहिए, और यूनिफाइड वेब पोर्टल तैयार होना चाहिए, और टेंडर एक्चुअली तो टाइम पे भी होना चाहिए। वैसे टेंडर को होते होते करीब करीब 6-8 महीने हो चुके हैं, अभी तक वेंडर एम्पेनलमेंट नहीं हुआ है। अभी हाल ही में कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाए गए हैं डिस्कॉम की तरफ से कि रूफटॉप सोलर सेल बनेगा, और शायद यूडब्ल्यूपी भी जो है वो लगभग लगभग तैयार है। तो इसमें मेरा तिवारी सर से सवाल ये है कि भाई ये वाकई रूफटॉप सोलर सेल बन रहा है कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, कुछ लोगों का चुनाव करके, या फिर ये सिर्फ जिस तरह से बाकी पॉलिसीज बनती हैं वैसे ही सिर्फ कहने के लिए, मतलब जो लोग डीएसएम में थे, जहां तक मुझे पता है जो लोग डीएसएम देखते थे वही लोग नेट मीटरिंग और सोलर से रिलेटेड चीजें देखते थे तीनों डिस्कॉम में। तो क्या उन्हीं लोगों का नाम डाल के और उसको एक सिर्फ रूफटॉप सेल का नाम दिया गया है, या वाकई में कोई ऐसा सेल बनेगा जो हमारी बात सुनेगा और जो सोलर के अलावा किसी और चीज पे ध्यान नहीं देगा? बिल्कुल अजय जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है।
यादव जी, ये अभी आपने देखा होगा पिछली मीटिंग में एमडी साहब ने हमारे कमिटमेंट किया था कि एक सोलर सेल बनेगा जो केवल रूफटॉप सोलर से संबंधित कार्यों को ही देखेगा। तो आप विश्वास कीजिए कि ऐसा सोलर सेल बनेगा। डीएसएम सेल का अलग फंक्शन है, डीएसएम सेल अपना काम करेगा, सोलर सेल अपना काम करेगा। तो उसमें डिस्कॉम से जो सिलेक्टेड लोगों को उसमें लगाया जाएगा, जो आपकी जो समस्याएं हैं जो रूफटॉप सोलर लगाने में जो आएगी प्रोबेबल, उसका उसका जो है वो निराकरण करेंगे। और इस प्रोजेक्ट को जो है हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराने में आपका और आपके जितने भी वेंडर्स हैं उन सबको पूरा सहयोग करेंगे, और इस बात का विश्वास रखिए। और यूनिफाइड वेब पोर्टल के बारे में कुछ आप यस, बताना यूनिफाइड पोर्टल सर वैसे तो रेडी है। उसमें हमारे जितने भी अजमेर और जोधपुर और जयपुर तीनों डिस्कॉम के जो कंज्यूमर्स हैं उनका उसमें इंटीग्रेशन हो चुका है। उसके अलावा कुछ कंज्यूमर्स उसमें अभी शायद नहीं हुए हैं, जैसे अजमेर टाउन में जो टाटा पावर जो हमारा फ्रेंचाइजी है उसके कुछ कंज्यूमर्स का इंटीग्रेशन भी नहीं हुआ है। ऐसे ही भिलवाड़ा और बांसवाड़ा जो जो सिक्योर मीटर के पास है, तो हमने एमबीसी मॉडल में उनको दिया हुआ है, क्योंकि उनका बिलिंग सेपरेट है तो उसका इंटीग्रेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन वो इंटीग्रेशन प्रोसेस में है। अभी हम उस तरह का इनको फॉर्मेट देंगे तो वो उस तरह का डेटा वो हमको जो दे देंगे और वो अपने सिस्टम से यूडब्ल्यूपी से इंटीग्रेट हो जाएगा। बाकी ऐसे ही जैसे आपके सीएससी का जो है, जैसे भरतपुर और कोटा है ना और बीकानेर, इनका भी डेटा शायद अभी उसमें इंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो इसके अलावा जितना भी जो पोर्शन है राजस्थान का वो सारा का सारा यूडब्ल्यूपी पोर्टल में आ गया है, और ये जो है यूडी पोर्टल फंक्शनल है। तो जैसे ही अपना ये एलओए मिलता है वेंडर्स को राजस्थान में, अभी अभी मेरे हिसाब से उसकी लास्ट डेट है। जो ओपन जी। कैटेगरी के जो कंज्यूमर्स थे उनको अपना काउंटर ऑफर सबमिट करने का लास्ट डेट है कल। तो सबमिट कर देंगे, उसके बाद एलओआई और एलओए जो है वो जारी करेंगे। तो आप पता ही है, अजमेर डिस्कॉम को तो एलओआई और एलओए अजमेर अपने लिए जारी करना है। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम का भी एलओआई अजमेर डिस्कॉम जारी करेगा, और उसके बाद रेस्पेक्टिव डिस्कॉम अपना अपना वर्क ऑर्डर जो है लेटर ऑफ अवार्ड जारी करेंगे सभी वेंडर्स को। उसके बाद आपका नेशनल पोर्टल और ये सारा जो है ना सब फंक्शन हो जाएगा। सब बेनिफिशियरी जो भी है इसमें, वो अपना जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अप्लाई कर पाएंगे, और आगे का प्रोसेस पता ही है आपको। बिल्कुल। अच्छा सर, देखिए अभी आपने एक बात कही है, बिल्कुल आपने खुद ही ऐसी चीज़ बोल दी कि भई नेशनल पोर्टल और सब चीज़ें फंक्शनल हो जाएँगी, जो भी एक पर्सन होगा रिस्पॉन्सिबल जो नेशनल पोर्टल को भी देखेगा और ये सब कर पाए। तो अब अगर इसको मैं, चलिए भले ही हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर इसको नेशनल पोर्टल से भी जोड़ता हूँ, तो आपने देखा होगा पिछले वीक बहुत बड़े एडवर्टाइज़मेंट आए नेशनल पोर्टल के हर लीडिंग न्यूज़पेपर में। तो जहाँ पे डिस्कॉम अभी तक तैयार नहीं है, तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, मैं इसको अगर मैं नेशन वाइड बोलूं, तो डिस्कॉम्स में लोग अभी रिस्पॉन्सिबल बंदा है नहीं कि भाई कौन उस एप्लीकेशन को देखेगा। और ये जो प्रमोशन जो एड आया कल, मतलब पिछले वीक, उससे पहले ही करीब 30 से 35 हज़ार रजिस्ट्रेशन नेशनल पोर्टल पे हो चुके थे, जिसके लिए फिर से वही बात कि एमएनआरई ने बहुत वाहवाही ली कि हाँ भाई बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो हमें और इसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन वहां पे भी तैयारी की कमी दिख रही है कि डिस्कॉम लेवल पे वो जब तक इंटीग्रेट नहीं, या लोग उसके लिए ऑथराइज नहीं है, क्योंकि लोग अप्लाई कर रहे हैं और 15 दिन का टाइम है फिजिबिलिटी के लिए, लेकिन वहां पे महीना महीना निकला जा रहा है और अभी ऐसी कुछ भी चीज देखने में नहीं आ रही है। अपने डिस्कॉम में अजमेर डिस्कॉम का जैसे ही आपका अजमेर और जयपुर जोधपुर का जैसे ही अपना वर्क ऑर्डर जारी होता है, उस बाद आप देखिएगा इसमें एकदम जो है एकदम से आपको बदलाव मिलेगा। और क्योंकि डेडिकेटेड इसको लोग देखेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन को भी देखेंगे, और जो फील्ड में जो लोग इस फिजिबिलिटी चेक करने वाले हैं उनको फॉलो अप करेंगे। अभी हमारा प्राइमरी वर्क है आपका वर्क ऑर्डर जारी करना, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बिना वर्क ऑर्डर के तो अब कुछ भी कर भी लो तो क्या कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर देना, वो जल्दी दे देंगे ये है। बिल्कुल। तो देखिए हमने जो है सोलर मार्केट आउटलुक फॉर राजस्थान पे काफी कुछ बात कर दी, लेकिन ये सेशन जो शुरू हुआ था वो इन्वर्टर से शुरू हुआ था। ग्रोवाट प्लेटिनम पार्टनर है और हमारे साथ केहुआ से भी हैं सौरभ जी। तो मैं एक सवाल सौरभ जी के लिए भी पूछना चाहूंगा कि अभी गवर्नमेंट एक बिल जो है वो ड्राफ्ट कर रही है, राइट टू रिपेयर। इन्वर्टर में अक्सर क्या देखा जाता है, एक्चुअली इन्वर्टर ही नहीं, इन्वर्टर मॉड्यूल, इसमें कहने के लिए ऐसा लगता है, इन्वर्टर में तो तब भी वारंटी मिलती है, लेकिन जैसे पहले मैं मॉड्यूल की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम 25 साल की बात कर देते हैं या
10 साल 12 साल की वारंटी की बात करते हैं, तो वहां पे जब असली में वारंटी लेने की बात आती है तो वहां पे कंपनी सबसे पहले ये देखती है कि भाई कहीं कुछ हमें ऐसा पॉइंट मिले कि जहां पे कुछ छेड़खानी हुई हो, तो हम उसको ये बोलें कि साहब ये तो आपने एज पर जो है हमारी जो गाइडलाइन थी वैसे किया नहीं, आपको देखो हमने पेपर भी दिया था, या फिर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते कि भाई इंस्टॉलेशन मैनुअल क्या कहता है, आपने वैसे नहीं किया है। इन्वर्टर में तो उससे भी बड़ी बात ये होती है कि आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हो, कहीं से आपने खुलवा दिया कुछ भी ऐसी चीज करी तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। और ऐसी सिर्फ इन्वर्टर में नहीं, मोबाइल और कई सारी चीजों में होता है। लेकिन इन्हीं सबको ध्यान में रख के अभी एक राइट टू रिपेयर आने वाला है, जिसमें ये होगा कि भाई आप जो कंज्यूमर है, जो जिसने परचेज किया है, वो बायर जो है, उसको ये हक होगा कि वो अपना इन्वर्टर रिपेयर करवा सकता है, चेक कर सकता है, खोल सकता है, और आपको उसको सारे मैनुअल्स क्या चीज लगी है, कैसे लगी, और वो सब वो देख सकता है, आपको उसको प्रोवाइड कराना होगा। और ऐसा करवाने पे उसकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। तो अगर ऐसा कोई एक्ट आता है तो उससे मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए अजय जी, अभी आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट का एमएनआरई का फोकस है मेक इन इंडिया, जी जो कि मेक इन इंडिया मीन्स यू कैन ईदर असेंबल इन इंडिया और यू कैन डिजाइन द इन्वर्टर्स इन इंडिया एंड यू हैव टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इट कैन बी ईदर वे। राइट सो मेक इन इंडिया जब हो जाएगा, जैसे अभी फिलहाल वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग विद मल्टीपल पार्टनर्स एंड प्लेयर्स फॉर मेक इन इंडिया। अभी आप देखेंगे बहुत सारे मॉड्यूल वाले इंडिया में ऑलरेडी है, वी हैव अ सफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वर्टर्स में भी, सेंट्रल इन्वर्टर्स में देर आर मेनी कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग इन्वर्टर्स इन इंडिया। सो उन लोग को क्लाइंट के केस में आप जो कह रहे हैं रिपेयरिंग का चैलेंज आता है, मतलब आई हैव सीन मैनी केसेस बिकॉज ये एक ट्रेंड पहले से बनाया गया है। लाइक व्हेन वी स्टार्टेड इन वे बैक इन, इफ आई टॉक अबाउट माय professional career, so when I was in Delta, so we have seen our competitors were claiming a warranty certificate and they were offering an installation guidelines. As per them, you cannot open the inverters, yet you can repair it. It is available, it is possible on site and off site at the repair center also, depending on the problem. But it was easily repairable way back 10 to 15, 10 11 years back also, and now also. So it is just like an electronic power supply which can be opened up, which can be repaired, it can be replaced for the faulty component. Everything is possible. So okay, I understand customers want to get it rectified immediately. Suppose we have an air condition installed at home. If it is not working, my first thing will be immediately call the service guy, and I expect it he should be here in my house and within 1 hour. But it is not possible because air condition is an already old and set market. You will see multiple third party companies who are doing the service and repairing, but what warranties we offer in our air conditions or inverters is different. In inverter you get a complete warranty. If there is a problem, company will replace the inverter or repair the card or repair the inverter. But in case of other electronic item, they only provide warranty for the motor. So it is different for the consumer and the other electronic item like your automotive segment. If you have any issues, your electrical parts are covered. Your engine is covered in warranty, right? right Not your tires, not your dent and paint. But in case of inverter, if there is any issue, customer has the first instant, he will immediately call the service guy. Boss, my inverter has a issue. Even if there is a small error, which can be rectified by switching off the inverter and again switching it on, people has a tendency to immediately call and they expect within 1 hour company guy should come and they will immediately replace the inverter, repair it. So we have to tell our customers that was to get that type of service, to get that type of support, you have to pay for the service and you have to pay for the quality. On the one way, people are expecting low cost product where they expect the price should go down every quarter. On the other side, they expect that engineer should come within 1 hour. So there has to be some living space, there has to be some margin offered to the companies also to survive, right? Because we see many companies coming from China, from other parts of the world, and they come, they offer low price, and they go away after 3 4 years. We have seen many companies like Chinese companies also, which has entered in a big way, and then they have decreased their supply in India, and then they slowly they are moving towards closing down. So my point is that repairing was possible in the past. It is still possible, but
we recommend that you should get it repaired from the company authorized dealer, not from any third party, because if your inverter is in 5 years or 10 years warranty, you should trust the company to repair it. If you want to have immediate support, then it's a different case. You need to check before buying the inverter how far is the engineer and how many engineers the company has. Just like in Rajasthan, we have more than 1 gigawatt of installation within Rajasthan, and we have 4 engineers in Rajasthan. But Rajasthan is such a big state, I cannot send one engineer to each and every corner within 1 hour. It takes time. And then to repair an inverter, every inverter will not have a same problem. It can be a manufacturing fault, it can be an external fault. So for any type of fault, I need to have the sufficient spare parts. If it's a complete inverter, I have inverter also, which I can give you as a replacement. But again, repairing was possible even if you talk about modules. When I was in the module company, I have seen our competitors, many other clients, where the backsheet is getting repaired or the junction boxes, the wires has been stolen. The thieves has taken away the wires. They have cut the wires from the junction box because of copper, and they have taken it away. And company has repaired the junction boxes of the modules also. So you are very right. The policy is required so that company, all the manufacturer should be, tighten up in terms of service and repairing, because there are few companies which are offering low cost inverter and they don't believe in repairing. They said, "Oh, boss, inverter is damaged. Oh, throw it away. It is your fault." Even if one screw is open, they will say it is not covered under warranty, because those companies, they plan to come to India, they sell off inverters. After a few years, they will go back, and then you will be looking for service because the life of the product is 25 years, but warranty was 5 years. After 5 years, either they will change their product design, just like modules. 5 years back, you buy a lot of 320, 325, right? Now 320, 325 is not available, and then there is 44% duty on the module, including BCD and your social welfare charges. So again, whatever you're planning to buy from a reputed company. Just make sure that company has a long history, and they are able to service and able to provide you service, and the product what they are offering is a good product with 25 years of life and 5 years warranty. And you should at least take 10 years of warranty, because with 10 years company also see that there is a confidence offered by the client, and they are serious about the company and its products. Okay. Okay. Thanks, Saurabh ji. Ashu ji, are you online? Yes, yes. हाँ, आशु जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, क्योंकि हर चीज रेगुलेशन और पॉलिसी उसके आसपास ही घूमती है भाई। अपन राजस्थान की बात करें या नेशनल लेवल पे बात करें, तो अ, क्या आपको लगता है कि भाई जो पॉलिसीज जो बन रही हैं हमारे यहाँ पर, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए, फिर हम जो है ग्राउंड माउंटेड या उसकी बात नहीं करें, वो तो एक एनटीपीसी आएगा और एक प्लांट ही 10 गीगावाट का लगा देगा। अपन उसकी बात ना करके हम ये बात करें कि भाई ग्रास रूट लेवल पे क्या काम हो रहा है, वाकई क्या एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और क्या लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल एंड यूजर जो परचेज करने वाला है ना, जो रेजिडेंशियल या C&I वाला है, उनकी बात करें, उनको ये डर रहता है कि कल को पॉलिसी बदल गई। एक मैं छोटा सा रेजिडेंशियल 6 किलोवाट की बात करूं, तो उससे ये कहा गया था कि भाई 3.5 साल में अगर आप सब्सिडी में लगा रहे हो, 3 साढ़े 3 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। उसके बाद ईडी आ गई और वो फिर लड़ते रहते हैं। वो जो लोग कोर्ट में जाते हैं उनको स्टे मिल जाता है, बाकी पे ईडी लगती रहती है। ये हो गई राजस्थान की बात। इसके अलावा जैसे मैं देखूं कि GST, BCD, ALMM और फिर उनके एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, या फिर कभी भी कुछ भी नया आ जाता है, तो इससे चाहे हम इन्वेस्टर की बात करें, चाहे हम एंड यूजर की बात करें, चाहे कोई भी स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो वो कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं या क्या रुकावटें आती हैं इन सब चीज़ों से? See, the first thing is कि your question every time is कि no matter we are leaders in solar in the state and we have the largest installation, however, the power is not being consumed within the state. So this is one of the biggest question which everybody asks, not only you, everybody asks कि why this happens. Now, if you see, this happens primarily because the capacity built up
for the self consumption in the state is dependent on how religiously you comply with your RPO, or how serious is the DISCOM towards compliance of its RPO. No matter RPO, as per the definition, is a mandatory requirement to be complied. But if you see across the country, it has become a compliance at will type of concept. Uh, the states which have got the highest amount of solar installed, say for example Maharashtra, or if you see Rajasthan, these are the states which actually are the biggest laggard in terms of RPO compliance. No, so that is one of the reasons. So if from compliance at will we suddenly move to a concept of, yes, if it is a mandatory compliance, we have to do a mandatory compliance because it is in larger public interest. Your and everybody's issue that why the power is not consumed within the state will get resolved. Secondly, we all agree, we all will agree definitely that there is a very strange arbitrary restriction in the state, which is like the definition of captive has been twisted and defined as per the wish of the state, which doesn't prevail in any part of the country, in spite of the fact that Supreme Court and APTEL has defined. But I don't know, and nobody knows. Nobody has the answer ki why Rajasthan has defined the definition of captive as per their own will. Now, this is one of the reason why there are so less captive installations or CNI installations from ground mounted. So if you see Rajasthan, Karnataka, if they have a huge chunk of solar plant, a very big contributor obviously is the plant are the plants which are under open access. So open access is not coming up in the state, obviously, which consumes the power within the state itself, is only because of certain arbitrary these type of issues. Now, coming to the trust based on regulatory changes, you are talking primarily about the ED. Now, ED obviously is a state subject and can change from time to time. However, most of the regulatory provisions which were provided by the commission in the state have far, far more or less has been stable. So whatever were the provisions provided to the older regime projects still do exist, and but the new obviously the deterrent parts of the new regulation obviously has led to reduction of capacity addition. Now, coming to all those central government issues of ALMM or BCD hike, now for this the state of Rajasthan cannot be blamed for. It's a matter of center, where center has decided something with the intention that our dependence on China primarily goes down, because China has not been behaving rightly as per the agreement on our border issues, and we have a lot of border threats because of that. No matter it has given a wrong it had a bad replication, but someday or the other, definitely self sustainability has to be brought. And no matter what I feel ki initially there will be hiccups, but over a period of time I see ki in a year or so, right now if we are at 18 gigawatt of manufacturing facility, very soon we will be at 30 gigawatt, at least what I see, with some of big capacities of manufacturing of solar modules coming up in Rajasthan. Like 5 gigawatt, obviously, Renew is setting up, and some more will be definitely keen, because the state has given a composite waiver for GST if you are buying modules locally from the state. So, um, yeah, till the time the market of manufacturing and the products are stable, such type of harsh restrictions should not be there. Let the industry grow, and then if those type of things are implemented, it will have lesser impact. So obviously, if the regulator and the policy makers find a way so that more capacities come up in the state where the power is actually consumed within the state, that will be much helpful. Thank you. Thank you, sir.
A big thank you to all our panelists and Mr. Yadav, especially for being an excellent moderator. We now proceed to the question and answers round. I'll be displaying the questions on screen, and all panelists are open to answering the questions. This question is not clear actually. I think it has to be reframed. Is there are if it is compulsory to be a impaneled vendor to claim subsidy to a consumer? अच्छा अच्छा We'll move on to the next question. अच्छा, ये बिल्कुल ये एम्पैनलमेंट ही पूछना चाह रहे हैं मुकेश जी। बिल्कुल आपको एम्पैनल होना पड़ेगा और तिवारी सर इसका रिप्लाई करेंगे। कौन से क्वेश्चन का देना है, पिछले वाले का? हाँ, एम्पैनलमेंट जरूरी है क्या सब्सिडी दिलाने के लिए रेजिडेंशियल कंज्यूमर को? डेफिनेटली 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 जरूरी है सर। देयर इज ए कंपल्सन कि वो वेंडर जो है वो इम्पेनल्ड हो। और अब चूंकि टेंडर हो चुका है और उसका एलओए मिलने वाला है, तो आप नेशनल पोर्टल में एम्पैनलमेंट करा सकते हैं जिस डिस्कॉम में आप काम करना चाहते हैं। जी 2.5 जी, लाख की बैंक वो गारंटी दी। 2.5 लाख रुपए उसमें बैंक गारंटी आपको हर डिस्को में जमा करानी होगी। अगर आपको उसमें अगर आप वेंडर नहीं हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, फिर भी आपको अगर वेंडर बनना है तो 2.5 लाख रुपए आपको जमा कराना होगा तीनों डिस्को में अलग अलग। ऐसा क्लियर सर? क्लियर क्लियर। इसका रिप्लाई शांतनु जी देंगे। यस, अभी हमारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, बट यस वी आर लुकिंग एट वेरियस ऑप्शंस एंड आई थिंक 2023 विल बी द ईयर वेयर वी कैन गिव अ गुड न्यूज़ कि हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चालू हुआ है। तो इट्स जस्ट अ वेट एंड वॉच सिचुएशन, बट राइट नाउ हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में नहीं है। Okay, with this, we would like to thank all our esteemed panelists for the exhilarating session, and a very special thanks to Mr. Yadav for superbly moderating the session. We would also like to extend our gratitude to everyone for investing their valuable time and support for the event, hoping that the key takeaways from the session were instrumental in paving the way for sustainability. We promise to be back with more exciting sessions. Thank you and good evening. Thank you गुड all. इवनिंग मैडम, थैंक यू, थैंक यू साक्षी जी, Thank you. Thanks a lot. Thank you, everyone. Thank you, everyone. थैंक यू यादव जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स ऑल, थैंक्स। आगे आज अरविंद जी नहीं आए, अरविंद जी नहीं है, आपके सेक्रेटरी साहब नहीं आए अरविंद यादव जी, छोड़ दिया उन्होंने। ओके।